Hello bachcho, let's read this question. Statement 1. Manganese has a less favorable electron affinity than its neighbor on either side. Statement 2. The magnitude of an element's electron affinity depends on the element's valence shell electronic configuration. Read the following statements and select the correct option. These are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. The given question is based on the concept of electron affinity. So जो हमारे पास electron affinity होता है, first we will see what that is. Electron affinity. Electron affinity जो है, it is basically the amount of energy. And वो amount of energy जब release होती है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं into the neutral atom to form the anion. So let us say ये हमारे पास कोई element है X, and when one electron is added to this, then it will lead to the formation of the anion. So for this addition of the electron, जो हमारे पास amount of energy होगी, that represents the electron affinity. Here we can write the same amount of energy required or released when an electron is added to atom. Now let us see the trend of this in group or periods in the periodic table. जो हमारे पास group होता है periodic table में, that is basically from top to bottom का जो row होता है हमारे पास, that is from top to bottom. And whenever we move from top to bottom in the group, तो जो हमारे पास shell होगा that will be increased. Number of shell जो है वो increase होता है. So number of shell increase होता है. Let us say हमारे पास ये इस तरह से कोई element है in which the nucleus is there, and this represents the number of shell here in this way. So whenever we move from top to bottom, the number of shell increases by 1. And here we can see जैसे ही हम, let us say we are in the group 1 में है, then it will have only one shell, and group 2 में the number of shell will be increased. So here we can see the distance है from the nucleus that will got increased. ये 2 number of shell हो गया in this way. जो distance होगा from the nucleus that will be increased, and जो outermost electron होगा that will be the further away. So here we can write जो outermost electron होगा, outermost electron are further away, and जो इंट्रैक्शन होगा, और वी कैन से जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड हियर वी कैन राइट देयर विल बी द लेस अट्रैक्शन between the nucleus and outermost shell electron. And due to this, जो electron add होगा that can be easily placed in the outermost shell. So जैसे जैसे हमारे पास number of shells increase करते जाएंगे, then it will be more easy to place the electron into the outermost shell. Hence we can say in the group जो हमारे पास electron affinity होगा that will decrease because हमें कम amount of energy देनी पड़ेगी as the number of shell will be increased. So हमने यहाँ पे देखा जो group है in that electron affinity decreases. Now we will see same for the period. In the period जो हमारे पास होते हैं in the periodic table that are
फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और द हॉरिजॉन्टल रॉस बोल सकते हैं हम, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। एंड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है दैट इज एडेड टू द सेम शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एडेड टू सेम शेल, एंड सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, हियर वी कैन मेक, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे and it has electron already, now one more electron is to be added। तो सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरह से ऐड किया जाएगा, then the effective nuclear charge जो होगा that will be increased, which means जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा that will be increased। So due to this force of attraction between electron and nucleus get increased, here we can write increases, due to this जो effective nuclear charge होगा that is increased, effective nuclear charge also increases, and due to this जो atomic radii होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास जो शेल है उसका साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा in this way। So here we can say write atomic radii decreases, and atomic radii अगर हमारे पास डिक्रीज कर गई है then the more energy will be required to add the electron, more energy required, which means जो हमारे पास जो लास्ट शेल होगा इन दैट अगर हमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना हुआ फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, विच मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी हम चेक करेंगे, देन इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास एनर्जी होगी दैट विल बी more required when we move from left to right, hence we can say for group there is decrease in electron affinity, and in period there is increase in electron affinity। So this was about the की कॉन्सेप्ट। और जो हमारे पास स्टेटमेंट वन है, इट सेज मैंगनीज के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेस है एज कंपेयर टू द नेबर्स जो हमारे पास होंगे, विच मीन्स मैंगनीज है, मैंगनीज के साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है दीज आर द क्रोमियम एंड आयरन। मैंगनीज के पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द 25, फॉर क्रोमियम इट इज 24 एंड आयरन इट इज 26। Now here we will see the electron affinity trend with the help of the electronic configuration। जो हमारे पास chromium होता है that has the atomic number of 24 and the number of electrons present are 24 only, and जब हम electronic configuration लिखेंगे for the chromium that is the 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and here it is 4s1 and 3d5। जनरली होना चाहिए था कि यहाँ पे 4s2 एंड 3d4, बट बिकॉज अपना एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से ये ट्रांसफर कर देता है टू द d ऑर्बिटल सो दैट दे कुड गेट द हाईली स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट। जो हमारे पास d ऑर्बिटल रहता है दैट हैज द
इन टोटल 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, these आर प्रेजेंट इन सच अ वे, जिसे हम बोलते हैं दिस इज द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन वी हैव टू ऐड, हियर वी कैन राइट कॉन्फ़िगरेशन, when we have to add one electron, then जो इलेक्ट्रॉन होगा that can be add easily as compared to the manganese one, because जो यहाँ पर s orbital है that has the space to accommodate that. जो हमारे पास manganese है, in that case we have the 25 number of electrons present in the same. And अगर हम electronic configuration लिखेंगे for the same, then it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d5. Here we can see s orbital भी fully filled है and d orbital is half filled. It is half filled. जो हमारे पास 3d orbital है, in this it have 5 electrons which are unpaired, and this is the half filled. Due to this is in its स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये इसके लिए मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एंड जो इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल बी नॉट अकोमोडेटेड इजीली। सो जो हमारे पास मैंगनीज है that has the less electron affinity as compared to the chromium, and जो हमारे पास आयरन है, for that आयरन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा that we will write atomic number 26 है and the number of electrons are the 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Here we can see जो हमारे पास d orbital है, for that it has 6 electrons present in the same. So जो हमारे पास 6 electron है, then it is not in the half filled configuration. जो electron है that can be accommodated easily as compared to the manganese. So by this we can say जो हमारे पास मैग्नीज है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द लेस फेवरेबल देन इट्स नेबर्स ऑन ईदर साइड। स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एंड द स्टेटमेंट 2 सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हियर वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमने कंपेयर किया है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमने चेक किया है। So this is also correct. By this we can say the answer of this question will be option A only, which says both statement 1 and statement 2 are correct. So let us mark the option A as the final answer of this question. Option B, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.